Today we just don't celebrate an annual day, we celebrate a journey of transformation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all. Respected principal sir, distinguished chief guest, honorable guest of honor, esteemed faculty members, dear students and respected parents. A very warm welcome to our Annual Sports Day 2026 of Government Degree College, Zaharabad. Sports teaches something no classroom can. How to rise after a fall, how to work as a team, and how to turn effort into achievement. Now it's time to welcome our dignitaries onto the dais. A college is not just built with bricks but with vision, and guiding that vision is a leader who inspires excellence. I feel proud privilege to invite our respected principal sir, Professor Mohammad Aslam Farooqi sir, who is presiding over today's function. With the standing ovation, I welcome principal sir onto the dais. May I now request. It is my honor to invite our distinguished chief guest, Professor Mustafa Ali Sarwari Saab, Associate Professor, Department of Communication and Journalism from Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. With a big round of I request Muzaffar Ali sir to kindly come forward and welcome our sir. Salon at rupees 700 and open. Ahmed Jilani sir, Senior Editor, Munsif TV from Hyderabad. Come onto the dais to present a bouquet to sir. I respectfully invite our Vice Principal Sir, Dr. B. Lachaya Sir, to kindly grace the dais. I request Satyanarayan Sir to present the bouquet as a warm welcome. Quality and excellence in education are guided but by dedicated leadership. I humbly invite our IQAC coordinator and HOD of English department, Dr. P. Narhari Murthy sir, to kindly grace the dais. I would like to call Praveen sir to present a bouquet to sir. Invite Dr. P. Surendra sir, Assistant Professor and HOD of Political Science, come forward and grace the dais sir. I request Siddharth as a warm welcome. Humbly invite Saifuddin Wari sir, Retirement Municipal Commissioner, to grace the dais. Balaji sir to present a bouquet to sir as a warm welcome. Now I humbly invite Assistant Professor and HOD of Economics, X. Ramulu sir, onto the dais. I request bouquet as a warm welcome. Now I request Senior Assistant to present onto the dais. Now let us start. This beginning deserve a divine blessing. With this, hummed by Urdu Mahin Begum, BA first year. I humbly invite Janab Ahmed Amjad Saab, former principal from Junior College, Zaharabad, to grace onto the dais. I request Tanvi sir to present a bouquet to sir. President
of Zairabad to grace onto the dais. I request Muzaffar sir. I request and humbly invite Dr. Aisha Begum, alumni of college and presently assistant professor of Urdu at Government Degree College. I invite Preeti Madam. All the students, please be seated. Your seats, sirs and ma'am. And all the volunteers to look to the program. Every occupation's beginning deserves divine blessing. Let us start with hum in Urdu by Mahin Begum, BA first year. Come on, give a big round of applause. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں یا خدا اب رو رکھ میری تو یا خدا اب رو رکھ میری تو تیری کو ثنا کر تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے تجھ کو پکارا میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے تجھ کو پکارا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی التجا کر رہی ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری سب کو حاجی بنا دے تو مولا سب کو حاجی بنا دے تو مولا میں تڑپ کر دعا کر رہی ہوں اپنے محبوب کا در دکھا دے میرا سویا مقدر جگا دے لطف دنیا کو لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر
اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہی ہوں، بزم کی ابتدا کر رہی ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. We create a serene and divining beginning to today's program. Now I invite Dr. Mohammad Mehboob, former student of the GDC, to grace the dais, sir. Moving forward. And Sri Lata to present the Saraswati Devi Sutram in Telugu and seek the blessings of goodness of knowledge. क्लासरूम से डालिएगा तो सर, क्लासरूम से डालिएगा तो सर, क्लासरूम से. या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसारपरमा आद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीमभयदां जाड्याञ्जकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् एहं सवाहिनी ध्यानधायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे एहं सवाहिनी ज्ञानधायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. Devi Sutram. Thank you. A journey becomes meaningful when its milestones are remembered. Now I invite Dr. P. Narahari Murthy sir to present annual college report for the academic year 2025-2026. Next students, be ready for speech. Thank you, ma'am. Yeah, I have the privilege of presenting college annual report. It is with immense pride, gratitude and deep sense of accomplishment that I present the annual report of Government Degree College, Jahirabad for the academic year 2025-26. This year has been truly remarkable in terms of academic progress, research achievements, student success and community engagement. Our institution has continued its journey towards excellence by nurturing intellectual growth, promoting innovation, and fostering a spirit of social responsibility among students and faculty members. The academic environment of the college has been vibrant and dynamic, reflecting our commitment to quality education. One of the most significant highlights of the year has been the international recognition received by our institution when a scholarly book authored by the principal sir was inducted into the Library of Congress, United States of America.
This achievement has elevated the reputation of our college at global level. Alongside this, several milestones have been achieved by the institution. The academic year commenced on a highly auspicious and proud note. On 1st June 2025, Principal Professor Aslam Farooqi Saab has achieved a rare distinction when his scholarly work was included in the prestigious Library of Congress in Washington, D.C., USA. The pursuit of higher education and research continued with remarkable enthusiasm. On 16 July 2025, Dr. Muhammad Tanveer Saab, lecturer in history, was awarded his Doctor of Philosophy degree at the convocation ceremony of Telangana University. Further strengthening the research culture, a PhD Viva Voce examination for one of the research scholars under the guidance of Professor Aslam Farooqi Saab was conducted at Usmania University. This marked another milestone in the college academic year, demonstrating its achievement participation in higher research activities. The faculty also contributed significantly to the research publication. Dr. P. Narahari Murthy, head of the Department of English, published a research paper in an international journal, earning recognition for his scholarly work. Similarly, Masrat Begum from the chemistry department successfully qualified the Telangana state entrance test examination, adding to the academic achievements of the institution. In the field of economics, a proud moment was witnessed when Fatima Maiden, a lecturer, received a gold medal for being a postgraduate topper from Manu University, Hyderabad. The principal actively contributed to the curriculum development at the state level. He played a significant role in preparing post-graduation Urdu course material for Dr. B.R. Ambedkar Open University. Additionally, he was nominated as a member of the Board of Studies for UG Urdu at Usmania University and contributed to the formulation of Urdu syllabus for the degree colleges across Telangana under the guidance of Telangana Council of Higher Education. The professional development of faculty members remained a key priority throughout the academic year. Dr. P. Narahari Murthy attended the prestigious Future ED Summit in Hyderabad, where discussions on innovative teaching methodologies and educational technologies were held. Similarly, Dr. P. Surender sir, Sri S. Raman sir participated in an orientation program at Usmania University, enhancing their pedagogical skill and subject knowledge. The Department of Political Science actively engaged in academic discourse. Faculty members attended a national seminar on Vikasit Bharat, presenting research papers and interacting with scholars from various institutions. An extension lecture by Dr. B. Jagannathan further enriched the academic environment by providing insights into contemporary political issues. The principal also participated in a two-day principal's conclave at the MCR HRD Institute, Hyderabad, where he exchanged ideas and best practices with academic leaders. The college remained committed to the holistic development of students by focusing on academic guidance. An orientation program for first-year students was conducted in collaboration with the Telangana State Knowledge Corporation, helping them adapt in college life and understand academic expectations. The college also adopted digital practices by conducting paperless slip tests using Google Forms. This initiative was not only reduced paper usage, but also familiarized students with digital assessment tools. Career guidance session and training program conducted by organizations such as Magic Bus Foundation, Mahindra Pride, Piramal Foundation and People Tree Foundation equipped students with employability skills including communication, digital literacy and awareness of emerging technology like artificial intelligence and cyber security. Important occasions such as Telangana Formation Day, Independence Day, Republic Day, National Youth Day were celebrated with flag hoisting, cultural programs and competitions. Events like International Yoga Day encourage students to adopt healthy lifestyles. Language and cultural celebrations such as Telugu Bhasha Dinotsavam, Hindi Divas and International Mother Languages Day promoted linguistic diversity and cultural appreciation. Traditional festivals like Batukamma added vibrance to campus life. Special observations such as National Education Day, National Science Day and National Consumers Day provided academic enrichment through
lecturers' exhibitions and awareness programs, plantation drives, cleanliness campaigns, environmental initiatives, anti-drug rallies reflected the institution's concern for sustainability and healthy living. The Beti Bachao, Beti Padhao program emphasized the importance of women's education and empowerment. The NSS units played a vital role in community engagement by organizing camps by NSS program officers in nearby villages. Activities included health awareness, sanitation drives, interaction, and local communities. The college took steps to enhance infrastructure and integrate technology into teaching. The introduction of portable projector enabled ICT-based teaching, making classroom sessions more interactive and effective. Various competitions and workshops were organized to nurture creativity and talent among students. Poster exhibitions, precious parties, cultural celebrations, and academic workshops provided platforms for student participation and expressions. Students also participated in external events such as Vikasit Bharat Youth Parliament, where they engaged in discussions on national issues. The college maintained high standards of academic quality through regular audits and reviews. Academic audits conducted by external experts provided valuable feedback for improvement. The institution and its faculty received several recognitions throughout the year. The principal was honored at various forums for his academic and literary contributions. Faculty and students were also recognized for their achievements, reflecting the culture of excellence nurtured within the institution. The college maintained supportive and inclusive environment by celebrating personal milestones of staff members. Administrative matters such as faculty renewals and meetings were handled efficiently, ensuring smooth functioning of the institution. The college undertook proactive measures to improve student enrollment through awareness campaigns. Faculty members actively participated in election duties, demonstrating their commitment towards civic responsibilities. Their involvement in election process reflected the institution's dedication to democratic system. The academic year 2025-26 has been a period of remarkable achievements and steady progress for Government Degree College, Jahirabad, from international recognition to community service. With renewed determination and vision, we look forward to achieving greater milestones in the coming academic year under the guidance of our principal sir and under the guidance of our esteemed staff members. Thank you very much, sir. Highlighting the achievement and progress of our institution. Now I request Mubin sir to present a bouquet to Muhammad Azam Ali sir. Tomorrow. I now invite Fatima BA first year for English speech. Fatima from BA first year. Next. I'm thankful to our respected Honorable Principal Dr. Aslam Farooqi sir and all my dear teachers and all my dear friends for giving me opportunity to speak something about our college. Firstly, I'm grateful and lucky studying in Government Degree College, where we can have all the facilities like library, peaceful nature, and also the good environment around ourselves. And we can have all facilities. I'm studying in BA first year and I have one goal in my life. And I'm trying hardly and mentors holding forward towards my dream. I'm very lucky to have these good mentors in my life who guide me in my every step, and I'll work hardly and also smartly to achieve my dream. I'm saying everyone that here in Government Degree College, we have every facility which a students need. What they need,
books to study, a very good nature where we can concentrate our mind and achieve what we want in our life. Smart, just concentrate on yourself and decide what your dream is and work on it. They help us on every way where we are stuck. I'm thankful to confident and impressive speech. Well done. Now I call Gayatri from BCom second year for Telugu speech. కళాశాల ప్రధానాచార్యుల గారు ప్రొఫెసర్ మొహమ్మద్ అస్లం ఫారూఖీ సార్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చేసిన అతిథులకి, మరియు నా ప్రియాతి ప్రియమైన సోదర సోదరి మనులారా, నా మిత్రులారా, అందరికీ నమస్కారం. అలాగే యాన్యువల్ డే శుభాకాంక్షలు. తెల్లవారితే సూర్యోదయం, చీకటి పడితే చంద్రోదయం, ముందుకు సాగితే అభ్యుదయం, మన కళాశాలకి రావడం జ్ఞానోదయం. నేను ఈ కళాశాలలో చదువుతున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంలో ఉల్లాసంగా ఉండే నా మిత్రులు, అన్ని సౌకర్యవంతమైన ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. కళాశాలలో జరిగే కార్యక్రమాలతో పాటు వేరే కాలేజీలో జరిగే కార్యక్రమాలు కూడా, అంటే ఆర్టికల్ 352 సంగారెడ్డిలో జరిగే కార్యక్రమం, మళ్ళీ మొన్న ఆచరణ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్, మళ్ళీ మెదక్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడతో పాటు అక్కడ కూడా మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిండ్రు. అంటే చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ, సమాజంలో ఎలా బతకాలి అని నేర్పించిండ్రు. మనం కాలేజీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాం. మరి మనం కాలేజీకి ఏం చేయాలి, మనం కూడా ఏదైనా చేయాలి కదా, ఏదైనా చేయాలి తప్పకుండా. ఒక చిన్న పాట. రారా పోదం కాలేజ్ పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తులమంటున్నది. రారా పోదం కాలేజ్ పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తులమంటున్నది. ABCD dancing time, EFGH learning time, IJKL hoping time, MNOP playing time. చుక్కలని కలుపుతాం మేం, అక్షరాలు పలుకుతాం మేం, పదం పదం చదువుతాం, కథలు చదివి చెప్పుతాం మేం, ప్రశ్నలేస్తే విప్పుతాం, పాటలన్నీ పాడుతాం మేం, అభినయించి ఆడుతాం. రారా పోదం కాలేజ్ పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తులమంటున్నది. ఏది డెబిట్ ఏది క్రెడిట్, ఎన్ని మొత్తం ఎన్ని, ఏది ముందు ఏది వెనుక, ఆపరేటింగ్ చేస్తాము మేం, సాఫ్ట్వేర్లం అవుతాము, బ్యాంకు లెక్కలు చేస్తాము మేం, లెక్క అప్పజెప్తాము. రారా పోదం కాలేజ్ పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తురమంటున్నది. ఒకటి రెండు రా, నువ్వు నాకు ఫ్రెండురా, ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ చదువుకోవచ్చురా, చదువుకుంటూ ఒక్కో మెట్టు పైకి చేరవచ్చురా, చందమామనైన మీరు అందుకోవచ్చురా. పువ్వులాగా నవ్వుతాం మేం, చెట్టులాగా ఎదుగుతాం, మబ్బులాగా తిరుగుతాం మేం, చినుకులాగా జారుతాం. రారా పోదం కాలేజ్ పిలుస్తున్నది, ఆడుకుందాం చదువుకుందాం దోస్తురమ్మంటున్నది, మన దోస్తురమ్మంటున్నది. థ్యాంక్ యూ. Scheme from BZC final year for Urdu speech. वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन. उम्मीद है कि आप तमाम मुझे जानते होंगे. मैं ज़ेबा तस्कीन BZC साले सुवम की तालिब इल्म हूँ. सबसे पहले इस पुरवकार महफिल में मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने कुछ कह सकूँ. आज मैं जो कहने जा रही हूँ वो सिर्फ अल्फाज नहीं, मेरे जज्बात है. हाँ, जब इस कॉलेज में कदम रखा था, शुरुआत में डर था, अनजानी सी राह थी, बस खुद पर यकीन और हाथों में चाहती,
یہ سفر جو یہاں سے گزرا ہے ہمارا، یہ سفر جو یہاں سے گزرا ہے ہمارا، وہ صرف تعلیم نہیں ہماری پہچان بھی. اور اگر میں اپنے کالج کو شاعری میں ڈیفائن کر سکوں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی: یہ عمارت صرف دیواروں کا جوڑ نہیں، یہ عمارت صرف دیواروں کا جوڑ نہیں، یہ سپنوں کا گھر ہے، کوئی اور موڑ نہیں. یہاں ہر قدم پر سیکھنے کو کچھ ملتا ہے، یہاں ہر قدم پر سیکھنے کو کچھ ملتا ہے. یہ گورنمنٹ ڈگری کالج ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں. جی ہاں، یہ ہے گورنمنٹ ڈگری کالج، جہاں صرف کتابیں نہیں کھلتی، یہاں نصیب کھلتے ہیں. جہاں صرف ایگزامز نہیں ہوتے، یہاں زندگی کے فیصلے طے ہوتے ہیں. اور اس لیے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اس ادارے سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. اور اب کچھ ہمارے پرنسپل جناب محمد اسلم فاروقی سر کے لیے. ہمارے پرنسپل صرف ایک پرنسپل نہیں، وہ اس کالج کی پہچان ہے، ایک رہنما ہے. اس 3 سالہ وقفے نے سر نے ہماری بڑی ہمت افزائی کی تاکہ ہم اس طرح آپ تمام کے سامنے آ کر کچھ کہنے کے قابل بن سکیں. اگر میں سر کے لیے یہ شعر کہوں تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا. ان کی سوچ نے ہمیں اڑان دی، ان کی سوچ نے ہمیں اڑان دی، ان کی رہنمائی نے ہمیں پہچان دی. اور جو ہم کھڑے ہیں اس مقام پر، اور جو ہم کھڑے ہیں اس مقام پر، اس میں ان کی محنت نے جان ڈال دی. اور اب ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جنہیں ہم استاد کہتے ہیں. اگر میں اپنے حساب سے کہوں کہ مجھے اس کالج سے جو سب سے بہترین چیز ملی وہ میرے اساتذہ اکرام ہیں، جنہوں نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، حوصلہ بڑھایا اور ہمت افزائی کی. ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی: یہاں ہر استاد ایک روشنی کا چراغ ہے، یہاں ہر استاد ایک روشنی کا چراغ ہے جو اندھیرے کو مٹانے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم خوش نصیب ہے جو اس چمن کا حصہ بنے، ہم خوش نصیب ہے جو اس چمن کا حصہ بنے، جہاں ہر شخص ہمیں آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے. چونکہ ہم فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اس لیے کالج میں اب ہمارے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو ہم یہاں سے ڈھیر ساری یادیں اور میموریز سمیٹ کر جا رہے ہیں، جس پر یوں کہوں گی: ہم جا رہے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جا رہے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم جیسے لوگ جاتے نہیں، یاد رہ جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. I invite Yusra Naqib from BZC second year to share experience of our college. Good morning and Assalamu alaikum. My name is Yusra Naqib. I am a student of BSc second year English medium. It is a great honor for me to stand here in front of you all on the special occasion of Annual Day. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Professor Mustafa Ali Sarwari sir. It is also my privilege to welcome our guest of honor, Mr. Sayyid Ahmad Jilani sir and Sayyid Saifuddin Wari Saif sir. And I warmly welcome everyone present here. Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. So accept the pain and get ready for success. Today, I would like to share a little about my journey. I studied in Saudi Arabia from LKG to 9th standard. And from 10th onwards, I continued my education here in India. Choosing GDC Zahirabad was my best decision. Many people think that students who studied abroad, who are NRI, prefer only private and high-profile colleges. It's everyone's own choice, and I accept it. But why I chose this college? I chose this government degree college, Zahirabad, because studying in a government college gives us many benefits, especially for government jobs. A government degree college provides a recognized and trusted degree which is accepted everywhere, whether it is for competitive exams, teaching jobs or any government vacancies. Students from government colleges have strong chances for getting government jobs because their degrees are authentic and valued. But a good college is not only about completing a syllabus, it is also prepares us for life, builds confidence and helps us grow better individual. And this is something we clearly see in our college, GDC Zahirabad.
I would especially like to mention our respected principal sir, Dr. Aslam Farooqi sir. Sir always brings innovative ideas to improve our college. He encourages us not only to focus on studies but also to develop skills and confidence. Sir handles everything in a very positive and supporting way. Our lecturers are also very kind and friendly and supportive. As a BSc student, I would like to appreciate my subject lecturers. Zoha ma'am from chemistry department explains every topic with a great creativity, making concepts easy to understand. Constantly motivates me to participate in every competition and supports me like both a teacher and a mentor. In botany department, Jagan sir, and zoology department, Nagarjuna sir. Teach in a simple and interesting way which makes learning enjoyable. In languages, Dr. Ishrat ma'am in Urdu and Murthy sir in English not only teach but also help us improve communication skills. And spoken English course was conducted by Narayan Murthy sir, which was very helpful for students. For skill development, Ishrat Unnisa ma'am from Political Science Department introduced a Mehndi course through which we received a government certified certificate which was totally free of cost. This shows that our college focuses not only on academics but also on practical skills. All the lecturers of our college, whether a teacher teaches our subject or not, all lecturers here treat students with respect and support us. This unity and teamwork is the real strength of our college. Before, our college had only BCom Urdu medium, but now it has expanded to BSc, BA, BCom, MPC in 3 different mediums. That is English, Urdu and Telugu. This clearly shows that our college is progressing towards success. At this moment, I would like to respectfully request our principal sir and all the authorities to consider introducing master's course in our college so that students can continue their higher education here in Zahirabad itself. Now, as our college has students from different mediums, I would like to share a few lines in different languages for representing the college's mediums. Firstly, in our Rashtriya Bhasha, Hindi. शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, कुछ जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं, किंतु दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। मेहनत और धैर्य ही पढ़ाई में असली ताकत है, मेहनत और धैर्य ही पढ़ाई में असली ताकत है, क्योंकि धीरे धीरे किया गया प्रयास ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलता है। Now, in our state language and one of the medium of our college, Telugu, Kashtam lekunda vijayam radu, Kashtam lekunda vijayam radu, Chadu ante kevalam, Guttu pettu kovadam kadu, Dani ardham chesukoni jeevithamlo, Upyogincharam mukhyam. In our international language and also one of the medium of our college, English. Study while others are sleeping. Study while others are sleeping. Work while others are loafing. Prepare while others are playing. And you will enjoy while others are regretting. Lastly, in our beloved language and one of the medium of our college, Urdu. उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मज़ा तो तब है जब किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूँ, मज़ा तो तब है जब किसी के खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूँ, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है. And finally, I would like to end this speech with a small blessing to our college. May our college continue to grow and shine. May every student achieve success.
اور اللہ ہمارے کالج کو اور ترقی دے اور ہر اسٹوڈنٹ کو کامیابی اور برائٹ فیوچر عطا کرے. تھینک یو اینڈ ہیو اے ونڈرفل ڈے اہیڈ. بہت خوب اسرا، آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ عثمانیہ یونیورسٹی، اف اللہ قبول کرے میری دعا. بابا افتخار کا باعث ہے کہ میری نواسی آج سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود یہاں پر آ کر اردو میڈیم میں داخلہ لے کر اس مقام تک پہنچے ہیں. میں ان کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ میں تمام اسٹوڈنٹس کو، گرلس اور بوائز کو یہ نیک تمناؤں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مقاصد میں زندگی میں اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے قوم اور ملت کا نام روشن کریں گے اور اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کریں گے. میں تمام کا پرنسپل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا. میں پھر ایک بار اسرا کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں ہمیشہ کامیاب رہے اور قوم اور ملت کے لیے، سب کے لیے وہ ایک اثاثہ بنے. For Yusra and sir. Now I invite Shravani from MPC second year for a speech. Good morning to one and all, respected dignitaries on the stage and off the stage, and all my fellow friends and seniors and juniors who has come here. College has given me many experiences. In that, the first fabulous experience is NSS camp, and also we went to Sangareddy in the district level on the topic 352 article emergency. These both are the first experience when I went out. From up to now, from 1st to 10th, I did not went anywhere from out of the school or anywhere. And NSS camp was very beautiful, which gave me a lot of knowledge and experiences. How the people react when we enter outside. We have done survey on it, and the banner made by Preeti ma'am, the program officer of NSS Unit 2, has got the appreciation from Usmania University. So I hope all you clap for that. NSS caps. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Gattiga andaru. Girls from the left side. Thank you, sir. Thank you, Shravani. Now I invite Alisha Tali Ali from BZC second year. Alisha. Good evening, everyone. My name is Alisha Taliani. I'm studying in second year BSc. I'm honored to be standing here at Government Degree College, giving on my amazing day. Our college might not have the greatest reputation, but we have got the heart, and that's what it matters, right? It's just a place where every day is a chance to learn, grow, and make some unforgettable memories. From study sessions to epic college festivals, we have shared all, and it's just about the academics, but inspiring our passion, making lifelong friends, and becoming the best version of yourself. I've moved from city to this awesome rural town, and honestly, it's a game changer. This college gave me a chance to explore, learn, and grow, and it's done the same for many of us, right? As I reflect my journey here, I reminded the vast opportunities that has reminded the college has provided me, especially as a young woman. This college has not only honored my skills and knowledge, but it also has instilled me in the sense of purpose and responsibility. It has given me a platform to discover my strengths and passions, and I'm confident that it's done for same for many of us. Our faculty is the backbone of this institution.
always pushing us for the best for ourselves. From organizing science fairs to women's empowerment programs, they're always working behind the scenes to make sure we have what we need to succeed. And our principal, sir, he's the best guardian. He's always looking us for thinking about our future and working tirelessly to ensure make and mark in the world. He does arrange many programs for students with expected the growth and provide knowledge from the experienced guides for our future. He's not just a principal, he's the mentor and the best guide that every course needs. Now let's honor our chief guest, Dr. Mustafa Ali Sarwari, a true pillar of journalism and Maulana Azad National University. He spent his career championing marginalized voices and modernizing Urdu media for the digital age. More than just a scholar, he is a dedicated mentor that has spent his life teaching us the journalism and a powerful tool for social change. And now let's honor guest of honor Syed Mohammad Jilani. As a prominent journalist and the lead anchor of News 18 Urdu, he owned his own Khas Bharat Telangana. He excelled his simplifying complex policies to the public. His career is dedicated to social justice, bridging at the gap between the government and Hyderabad citizens to the honors of impactful storytelling. Now, let's talk about the elephants in the room. The world's facing the critical issues that affect all of us, that's cybercrime, poverty, and healthcare access. Let's go with cybercrime. As we increasingly live our lives online, cybercrime is a threat that safety and security, from identity theft to online harassments, risks are real, but we can fight back, right? We can start by being more aware of online presence, use strong passwords, and reporting suspicious activity. Poverty is the harsh reality of many limiting access-based necessities like food. Difference by supporting organizations that provide economic empowerment, education, and job training. We can also volunteer our time and skills to help those in need. And the last is healthcare access. Many people lack access in quality healthcare, especially in rural areas. We can advocate better healthcare policies, support community health initiatives, and volunteer with organizations to provide medical services under-reserved communities. At last, I would like to say each of us has the power to make a big difference, whether it's starting from small actions or supporting large efforts. Let's use the day, find our passion, and contribute to solving this problem together. Thank you all. Talented BA student Mohammad Huzaifa for a speech. Good morning everyone. I am Mohammad Huzaifa. I have passed my graduation from Government Degree College last year, and today respected Principal Sir and Honorable Chief Guest, all the lecturers and my dear friends. Today I feel proud to stand here as a student of this Government Degree College. Our college is not just a place of education, but a place where dreams take to shape and future are built. Government College plays an important role in providing quality education to students from all backgrounds. They give equal opportunity to everyone to learn, grow and success in life. Our college, we gain not only knowledge from book, but also improve values like discipline, hard work and respect. Our teacher guide us at every step and inspire us to achieve our goals. And today I truly feel proud to receive this, my college has called me to receive this award for getting a top marks in my BA, and this recognition means a lot to me, and I would like to thank especially Principal Sir and my lecturers, especially Ramlu Sir and Dr. Surendra Sir for giving a guidance and support, encouragement which helps me a lot to take motivation from you. And I would like to thank my parents and my friends who always motivated me to do my best. This achievement is not just mine, but as a result of their motivation, guidance and support which I have got from my lecturers. And I am currently pursuing my Master of Arts in Economics at Palamuru University, Mahbubnagar. Along with my academic journey, I am also preparing for Civil Services examination. It is my dream to serve the nation as positively to the society. And today I received this honor with a responsibility to make striving excellence in the future also. Thank you for this honor.
I invite alumni president, patron of our college, Muhammad Azam sir, to share their valuable experience with us. Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone. Dais پر موجود پروفیسر مصطفیٰ علی صاحب سواری and Syed Rahmat Jilani صاحب and our heart person of the college, Dr. Aslam Faruqi صاحب and اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ میں جن کو جانتا ہوں. میرے استاد محترم جناب سید امجد علی صاحب جن کی بہت ساری قربانیاں ہیں اس کالج کو لے کر انٹرمیڈیٹ سے. شاید آپ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کے ہی شاگرد ہیں. امجد علی صاحب ہیں اور جناب ایوب صاحب ہیں جو کہ بہت جذبہ رکھتے ہیں ہم قوم کے لیے, سب کے لیے. ایک نیچر ان کا بہت اچھا ہے, وہ ہمیشہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. اینڈ کچھ امان صاحب ہیں ہمارے, غوری صاحب انکل, آپ کو بھی ڈیش پر دیکھ خوشی ہوئی. اور میرے دوست اینڈ میں لیکچر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سنیں گے تو میں بولوں گا, تھوڑا سا ایکسپیرینس دوں گا میں نیک کے بارے میں جو بہت ہی ویلیبل ہے آپ تمام کے لیے. فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں اور سیکنڈ ایئر کے بھی تھوڑا دھیان سے سنیں. اور دوسرے جو ڈیش پہ موجود ہیں میرے فرینڈ اینڈ لیکچرر سریندر سر جو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, اور راملو سر, اور میرے سپر سینئر عائشہ میڈم جو کہ ہم ساتھ میں مل کے نیک کا کام کیے تھے اینڈ شی از ممبر فار دا نیک ٹیم. جب ہم لوگ پہلی بار نیک کے لیے رجوع ہوئے تھے جب ہم سے اپروچ ہوئے تھے تو بہت ہی گھبرائے ہوئے, بہت ہی ڈرے ہوئے تھے ہم لوگ. سرینیواس راجو صاحب تھے اس ٹائم پہ جو نیک کے لیے آئے تھے. سداسپیٹ سے بہت ساری ٹیم آئی تھی, ہم نے ڈیڈیکیٹلی کام کیا تھا اس وقت میں. اور کالج کو اس وقت ہم نے ایز اے المونی ایسوسیشن بہت بڑا ریکارڈ دیا تھا. جو 5 مارکس ہوتے ہیں سارے 5 مارکس ملے تھے. آج آپ لوگ اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہیں انڈر ڈاکٹر فاروقی پرنسپل صاحب کے انڈر میں. یہ ہم لوگوں نے جب بار جو بی آیا تھا تو راجو سرینیواس صاحب تھے اس ٹائم پہ 2014 میں. میں چاہوں گا ان کے لیے آپ تالیاں بجائیں, یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا اس ٹائم کا. اور وہ اچیومنٹ کنٹینیو ہوتے ہوئے بعد میں بھوانی میڈم کے پاس آیا. اس سے پہلے اور ایک میڈم تھے چندرا مکھرجی میڈم سم تھنگ, میں بول رہا ہوں چندرا مکھرجی میڈم تھے. اس کے بعد پھر وہ بھوانی میڈم آئے. پھر میری ملاقات ہوئی چندرا مکھرجی میڈم سے ہوئی, بھوانی میڈم سے ہوئی, اور رویندر ریڈی صاحب بھی تھے جو انچارج پرنسپل تھے کچھ ٹائم کے لیے. پھر بعد میں سمیرا میڈم سے ہوئے. ابھی اسلم فاروق صاحب سے پہلی بار ملاقات ہوئی میری یہیں پہ. اب پتہ نہیں آن لائن ہوگا اس لیے ہم کو نہیں بلا رہے ہوں گے. ابھی نیک کا ہو سکتا ہے کہ آن لائن پروسیجر بنے, کہ آن لائن بھی اس کا کچھ چل رہا ہے. اگر آن لائن نیک بنے گا تو ہم کو بھول جائیں گے, اس کا مطلب یہی ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی ڈیڈیکیٹلی کیا ہے. اب جو بھی نیک کے لیے کرتے ہیں, جو اولڈ ایسوسیشن ہم لوگ کی بنی ہے جس کے لیے ہم نے بہت سارے گفٹ بھی کیے ہیں کالج کو, ہم نے اسپانسر کیا ہے. واٹر پیوریفائڈ میں نے خود میرے پاکٹ سے اسپانسر کیا تھا اس ٹائم پہ. اور دوسرا لائبریری بکس دیا تھا میں نے. میری ٹیم میں سے کچھ لوگوں نے بکس دیا ہے, کچھ لوگوں نے کلاتھ بھی دیا ہے. عائشہ میڈم ریممبر اینڈ ہمارا اور ایک ساتھی ہے جو میں بھول رہا ہوں نام ان کا. تو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ لوگ یہاں سے بن رہے ہیں, گورنمنٹ ڈگری کالج کو کوئی عام کالج مت سمجھیے. میں ایک کمپنی میں ایز اے AGM ہوں. آج راملو صاحب کے بہت بولنے پہ میں آیا اور اپنی ٹیم کو بلانے کی کوشش کیا لیکن نہیں آ سکے. ابھی تک بھی آتے بولے نہیں آ سکے. گورنمنٹ ڈگری کالج سے ہی ہیرے نکلتے ہیں. پرائیویٹ سے نکلیں گے تو پھر کے نکلیں گے, لیکن گورنمنٹ ڈگری کالج سے ہی اکثر ہیرے نکلتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ریڈی رہیے, اچھے سے اپنے اساتذہ کا تلاشتے ہوئے نکلیے. نگینہ بنیے, اپنے لائف میں کچھ بھی ایسا بنائیے کہ آپ کامیاب ہو جائے. کبھی بھی ہم لوگ جو ڈرتے تھے, جو ہمارے پاس جو ریسپیکٹ تھی, جو ہمارے اساتذہ سے ہم ڈرتے تھے, آج وہ نہیں ہے. آج بوائز میں دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہم دیکھ کے ہمارے سر کو سائیکل الٹی گھما کے بھاگتے تھے. اگر گلی میں سر گزر بھی ہوتے ہیں امجد صاحب تو ہم سائیکل الٹی گھما کے بھاگتے تھے. آج ایسا دور نہیں رہا. بچوں میں سیلف ریسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. سر اگر آ رہے ہیں تو گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں آج بائک پہ. ہاں چل وہ نہیں اپنا سر ہے کیا ہے. یہ چیز
बहुत मिस हो रही है, बहुत मिस हो रही है ये चीज। आप अपने असातिज़ा का यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम हमारे असातिज़ा की इज्जत करेंगे, लड़कियां करती हैं, लेकिन लड़कियां बाहर थोड़ी आती हैं, लड़कियां बाहर थोड़ी आती हैं। लड़कियां अगर इज्जत करती हैं तो लड़कियां बाहर थोड़ी आती हैं, हम बॉयज बाहर आते हैं। हम लोग को चाहिए कि हमारे असातिज़ा को हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, अगर आप मेरा नंबर सबके पास है, यहाँ पे है, मेरा टीम का भी नंबर है एसोसिएशन का, आप फाइनल ईयर के अगर हो सके ऑनलाइन ना हो, फिर से मैनुअल हो, तो हम लोग को जरूर याद कीजिए साहब, आपको सपोर्ट करेंगे, फिर से हम कॉलेज का नाम फिर से रोशन करेंगे। अभी जब बी ग्रेड आया था, B+ आया था भवानी मैडम के टाइम पे, तो जी सर जी, अभी असलम साहब इधर बोल रहे हैं कि A ग्रेड करेंगे, तो सब लोग A ग्रेड करेंगे ना? जोर से बोलिए। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तेलुगु मीडियम या उर्दू मीडियम, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भरपूर अपना ताउन दें। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो भूल मत जाना है कॉलेज को, आप लोग हमारा साथ दें, इंशाल्लाह जरूर हमको फिर से A ग्रेड आएगा। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से लाइफ में जो करना है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट खास तौर से बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बहुत सारी चीजें हैं, देखिए आप लोग। अभी A का जनरेशन है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप सब समझदार हैं। आजकल फोनों का बहुत बड़ा जमाना है, फोनों को साइड में रखिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और अच्छे से अच्छा अपना लाइफ में अचीवमेंट बनाइए, एक गोल बनाइए, एक मोटो बनाइए, उसको लेके चलिए। थैंक यू सो मच। Sharing your experience. Next, Dr. Muhammad Mehboob sir, former student of GDC Zahrabad. He completed MPhil from University of Hyderabad and PhD from Usmania University under the Professor Muhammad Aslam Farooqi sir. Recently awarded Lifetime Achievement Award by Telangana Urdu Academy. Presently working as TGT Urdu at Timris, Algol. Now I invite Dr. Muhammad Mehboob sir to share few words with us. Sir Aslam Farooqi साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और आज के मेहमानाने खुसूसी प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, सैयद अहमद जिलानी साहब, मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर यूसुफ साहब, MPJ अयूब साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद अमजद अली साहब, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद, और इसी तरीके से डॉक्टर आयशा बेगम साहिबा, मोहम्मद आजम अली साहब और दीगर लेक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदे और अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा जाता है कि मुल्क का मुस्तकबिल कमरे जमात में तैयार होता है, और आपके तालीमी मुजाहरे को देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल 14वीं के चांद की तरह चमकदार और दोपहर के सूरज की तरह रोशन होगा। आज हम जिस कॉलेज के सालाना जलसे में तकरीब हुए शिरकत किए हैं और जिस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद का सालाना जलसा मनाया जा रहा है, कॉलेज के क़याम के तकरीबन 35 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 35 सालों में डिग्री कॉलेज में मरहलेवार तरक्की हुई है। इब्तिदान जब ये कॉलेज कायम हुआ था 1990 और 91 के तालीमी साल में, बाजू में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग में था, और जब शिफ्टों में कॉलेज चलता था, सुबह के औकात में जूनियर कॉलेज और दोपहर के औकात में डिग्री कॉलेज, और उसके बाद साल 2004 और 5 में इब्तिदान एक ग्रुप था, उसके बाद मुतवाज़ी ग्रुप के तौर पे उर्दू मीडियम में BA का आगाज़ किया गया। उस मौके पर उस वक्त के असातिज़ा ने रज़ाकाराना तौर पर BA के लिए खिदमत फराहम की, जिनमें से एक शख्सियत यहाँ पर जनाब सैयद अमजद अली साहब मौजूद हैं, इनकी भी खिदमत रहीं। फिर इसके साथ साथ साल 2014 और 15 में गालिबन यहाँ पे उर्दू मीडियम में BZC का आगाज़ हुआ। इस तरीके से मरहलावार ये कॉलेज की तरक्की हुई। जैसा कि मुख्तलिफ अहबाब ने कहा है कि यहाँ पर, जैसा कि पेशरो मुकर्रिर ने कहा कि हीरे चूँकि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से ही निकलते हैं, तो यहाँ के भी फारिग तहसील तलबा का कई यूनिवर्सिटियों और बैरून ममालिक और मुख्तलिफ खानगी और सरकारी कंपनियों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मरतबा साल 2021 में जब से प्रोफेसर असलम फारूकी साहब यहाँ पर प्रिंसिपल की हैसियत से आए हैं,
कॉलेज की तरक्की जो है दुगनी और रात चौगनी के तरीके से तरक्की हो रही है, क्योंकि प्रोफेसर असलम फारूकी साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, वो कॉलेज में होते हैं तो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर उर्दू अदब किसी तकरीब में शिरकत करते हैं तो एक अच्छे अदीब हैं, यूनिवर्सिटियों में अगर जाते हैं तो एक अच्छे मुतरजिम कहलाते हैं, और फिर एक समाज में एक अच्छे मिसाली इंसान की हैसियत से आप मशहूर हैं। आज चूँकि अल्लाह ताला ने ऐसी काबिलियत और ऐसी सलाहियतें दी है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब का कोई सेमिनार होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर रास्त और बिलरास्त तौर पे प्रोफेसर असलम फारूकी साहब की मशवरा होता है, उनका ताउन होता है। चूँकि बैक वक्त वो उर्दू अदब पर भी महारत रखते हैं, अच्छे मुतरजिम हैं, और उसके साथ साथ उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में और टेक्नोलॉजी में भी कमाल तौर पर महारत रखते हैं। हमारी रियासत तेलंगाना की तकरीबन 10 यूनिवर्सिटियों में और मरकजी 2 जामियात में भी हर साल जो भी पीएचडी का कैंडिडेट निकलता है उर्दू से, तो किसी न किसी तौर पर वो साहब का मशवरा उसके जो है रिसर्च में शामिल होता है। और चूँकि आज से 20 साल पहले यहाँ पर मैं बीए में तालीम हासिल किया था, लेकिन मेरे तालीम हासिल करने के बाद एमफिल करने में, पीएचडी करने में, फिर उसके बाद हुसूल मुलाजिमत तक कदम ब कदम साहब की रहनुमाई और मशवरा रहा। बस अब चूँकि कम वक्त दिया गया है, तो उस कम वक्त में मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ की शख्सियत का जो है तस्वीर पेश करूंगा कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अल्लामा इकबाल के इस शेर की अमली तफसीर साहब अपने अमल से पेश करते हैं। चूँकि आज मुझे ये महसूस होता है कि आपको भी ये मशवरा है कि अभी कुछ तालिबा ने अपने तासुरात में कहा वो सिविल्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अपना हदफ और अपना निशाना सिविल सर्विसेज पे रखिए। हम डिग्री कॉलेज में आयशा मैडम के साथ जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल पहले, मैडम को गालिबन याद होगा, हमारे पड़ोसी रियासत मालेगांव की एक अच्छी शख्सियत है जो सिविल्स की तैयारी के लिए किताबें लिखते हैं, डॉक्टर अशफाक उमर साहब, उनको बुलाकर एक सिविल सर्विसेज की अहमियत पे प्रोग्राम रखे थे। तो आप भी सिविल्स का हदफ रखिए, अच्छा निशाना अच्छा है और उस पर मुसलसल मेहनत करते रहिए। असलम साहब की रहनुमाई रहे तो आप कोई नामुमकिन नहीं है कि वहाँ भी पहुँच जाएंगे। दूसरी बात, आज मैं 6 किताबों का मुसन्निफ हूँ, तो मुझे हर कदम पर हमारे ज़माने तालिब इल्म में अमजद अली साहब जो मशवरा बल्कि जो नसीहत देते थे वो कदम ब कदम याद आती है कि पेन पावर बढ़ाओ। उस वक्त तो हमें यह एहसास नहीं हुआ कि उस जुमले की मानवियत क्या थी, लेकिन जब अखबारात से वाबस्ता हुए, मज़ामीन लिखे, फिर इदारती सफ़े के लिए मज़ामीन लिखे, फिर उर्दू अखबार में सब एडिटर की हैसियत से हम मुलाजिमत का आगाज़ किया, तो साहब के जुमले की मानवियत का एहसास हुआ कि बहुत दूर अंदेशी का और पुरमग़्ज़ ये जुमला था कि पेन पावर को बढ़ाना चाहिए। मैं इस मौके पर अमजद अली साहब का भी मशहूर हूँ और मैं दिल की गहराइयों से प्रोफेसर असलम फारूकी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज़माने तालिब इल्मी से और उस्ताद बनने तक कदम ब कदम मेरी रहनुमाई की। मेरी क्या बल्कि तेलंगाना में और फिर पड़ोसी रियासतों में भी कई एक साहब के शागिर्द हैं जो आज मुसाबिकती इम्तिहानात में, फिर आला तालीमी इम्तिहानात में हर वक्त साहब से मशवरे लेते हैं। हमारे आगरा यूनिवर्सिटी में जो मोहतरमा असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से फायज हुए हैं, सादिया सलीम साहिबा, साहब के अंडर में डिग्री करे और फायज हुए, तो साहब की शख्सियत के लिए मैं मुनव्वराना के इस हॉल पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि उस्ताद वही जो शागिर्द को उस्ताद कर दे, उस्ताद वही जो शागिर्द को उस्ताद कर दे, और शागिर्द वही जो उस्ताद की शख्सियत को काबिल रश्क कर दे। और साहब का अमली मिसाल ऐसी है कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। बस मैं इतना कहते हुए अपनी बेसरोपा की गुफ्तगू का अख्तिताम करता हूँ। मुझे यहाँ पर जो मौका दिया गया है इसके लिए मैं इंतज़ामिया का और आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से बेहद ममनून व मशकूर हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आज हमारी बस में बहुत से मीडिया
हमारे कॉलेज के साबिक तालिब हमारे जो एम्प्लॉई है इफ्तिखार साहब, तो यहाँ से जूनियर लेक्चरर बन के तरक्की किया। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि शहर नशीन में तशरीफ लाएं। महबूब साहब थोड़ा सा Jazakallahu khair for sharing your experience, ma'am. For